Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you are all doing well. Today topic is start OSPF part 6. पार्ट 5 में हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें से साउंड क्लियर नहीं आया था, तो मैं उसको एक बार फिर से रिवीजन करना चाहता हूँ। क्विक में मैं उसे रिवीजन करूँगा। एक मिनट साउंड चेक कर लेता हूँ। हेलो गाइस, क्लियर है साउंड? क्लियर है साउंड? एक बार मैं प्रीवियस जो वीडियो था मैं उसको एक्सप्लेन क्विक में कर देना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान से थोड़ा सुन लीजिएगा। और थोड़ा सा उसमें साउंड प्रॉब्लम आ गया था, पीछे से आवाज़ आ रही थी। ठीक है, अब वैसा नहीं होगा, उसका सलूशन मैंने निकाल लिया है। एक क्विक रिवीजन करते हैं पीछे का हम लोग, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा था ओएसपीएफ का थ्योरी पार्ट। ओएसपीएफ का थ्योरी पार्ट 5th पार्ट पढ़ा था हम लोगों ने, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे एरिया, एबीआर एंड एसबीआर, एरिया आईडी, डिफरेंट बिटवीन सबनेट मास्क एंड वाइल्ड मास्क, पैसिव इंटरफेस, डेजिनेटेड राउटर एंड बीडीआर। और इसमें डीआर बीडीआर का इलेक्शन भी देखा था। तो मैं एक क्विक रिवीजन करना चाहता हूँ। रेडी करेंगे। चलिए, तो मैं इसके एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। यहीं पे मैं कर देता हूँ रिवीजन करने की जरूरत। हाँ, मैंने कल पढ़ा था एवीआर। सबसे पहले एवीआर पढ़ा था। एवीआर होता क्या है? मैं सिर्फ हेडलाइन लिखकर और डिस्कस करता चला जाऊंगा, क्योंकि आज हम लोग को प्रैक्टिकली करना है। एवीआर होता क्या है? एवीआर स्टैंड फॉर एरिया बॉर्डर, एरिया बॉर्डर राउटर। एरिया बॉर्डर राउटर। एवीआर जो हमारा होता है, इट इज अ राउटर दैट कनेक्टेड वन और मोर एरिया to the backbone. Two different routing cannot communicate to each other, but we can communicate via redistribute. हम लोग एरिया जो एवीआर जो करते हैं, यूज करते हैं कम्युनिकेट रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग एवीआर का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने एरिया पढ़ा था। तो एरिया का मैंने शॉर्ट डेफिनेशन बताया था। लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड एरिया। लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड एरिया। तो एरिया का भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एरिया भी हम लोग ने डिस्कस किया था। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एएसबीआर। एएसबीआर एसबीआर क्या होता है? ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। बाउंड्री राउटर।
ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, इसे शॉर्ट में हम लोगों ने देखा था, इट इज यूज टू कम्युनिकेट टू डिफरेंट प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, दो डिफरेंट प्रोटोकॉल को कम्युनिकेट करता है। और इसके बाद हम लोगों ने कल पढ़ा था एरिया आईडी। एरिया आईडी जो हमारा होता है, इट इज आइडेंटिफाई ऑफ एन ओएसपीएफ डोमेन एरिया, इट इज 32 बिट्स लॉन्ग डॉटेड एंड डेसिमल आइडेंटिफाई। ठीक है। और हम लोगों ने कल देखा था डिफरेंट बिटवीन सबनेट मास्क एंड वाइल्डकास्ट मास्क। different between subnet mask and wildcard mask। डिफरेंट बिटवीन सबनेट मास्क एंड वाइल्डकास्ट मास्क। जो हमारा सबनेट मास्क होता है, इट इज कंटिन्यूअस। सपोज डेट आई हैव अ /8 इक्वल टू, अगर हमें इस करना होगा, सबनेट मास्क निकालना होगा /8 का, तो हम लोग क्या करते हैं, 255.0.0.0, दिस इज कंटिन्यूअस। और यही वाइल्ड का निकालना होगा, इसका /8 का वाइल्ड का निकालना होगा, तो 0.0.0.0 एंड 255, दिस इज डिसकंटिन्यूअस। तो इसमें यही एक डिफरेंट है कि सबनेट मास्क और वाइल्ड कास्ट मास्क में सबनेट मास्क जो होता है कंटिन्यूअस होता है और वाइल्ड कास्ट मास्क जो होता है डिसकंटिन्यूअस होता है। आप एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि /8 इक्वल टू 255.0.0.0 एंड वाइल्ड कास्ट मास्क /8 इक्वल टू 0.0.255। फिर उसके बाद हम लोग ने पैसिव इंटरफेस पढ़ा था। पैसिव इंटरफेस में हम लोग ने देखा था, इट इज फीचर यूज बाय राउटिंग प्रोटोकॉल टू स्टॉप सेंडिंग अपडेट ऑन द इंटरफेस। और इसके बाद हम लोग ने डीआर पढ़ा था और बीडीआर। डीआर जो हमारा होता है डेजिनेटेड राउटर होता है। ये क्या करता है, डीआर इज द मेन राउटर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ओएसपीएफ डेटाबेस एंड एक्सचेंजिंग राउटिंग इंफॉर्मेशन विद द एरिया एंड सेम एरिया। ये क्या करेगा, डीआर जो होगा हमारा सेम एरिया में ही बनेगा। और बीडीआर जो होता है बैकअप ऑफ डेजिनेटेड राउटर, बीडीआर इज अ बैकअप ऑफ डेजिनेटेड राउटर फॉर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। व्हेन डीआर गोज डाउन, बीडीआर बिकम डीआर परफॉर्म इट्स फंक्शन। जो बीडीआर हमारा होता है क्या करता है, डीआर का बैकअप बनाने के लिए यूज करते हैं। अगर हमारा डीआर डाउन चला गया तो बीडीआर जो हमारा है डीआर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लोगों ने इलेक्शन किया था। इलेक्शन क्यों करते हैं, तो इसका हमारा जो डीआर एंड बीडीआर का इलेक्शन होता है, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टी एक्सेस नेटवर्क होता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, डीआर एंड बीडीआर इलेक्शन टेक प्लेस इन ब्रॉडकास्ट एंड मल्टी एक्सेस नेटवर्क। डीआर एंड बीडीआर इलेक्शन का हम लोगों ने देखा था कि कैसे इसके क्राइटेरिया है, कैसे डीआर एंड बीडीआर का इलेक्शन होता है। और इसको मैं छोटा सा मैं इसको बताना चाहता हूँ। डीआर बीडीआर इलेक्शन, डीआर एंड बीडीआर इलेक्शन जो होता है हमारा हमने सबसे पहले क्या देखते हैं डीआर एंड बीडीआर इलेक्शन में कि हाईएस्ट प्रायोरिटी विल बी डीआर। जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगा वो डीआर कहलाएगा। इफ प्रायोरिटी इज टाई, अगर प्रायोरिटी हमारा नहीं रहा तो देन हाईएस्ट राउटर आईडी विल बी डीआर। अगर मान लीजिए कि हमारा प्रायोरिटी, अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी डीआर नहीं बन पा रहा है, अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं है, तो उसके बाद ये क्या चेक करेगा, हाईएस्ट राउटर आईडी विल बी डीआर। अगर ये हाईएस्ट राउटर आईडी मिल जाए इसे, तो ये डीआर उसे जनरेट कर देगा। अगर देन हाईएस्ट लूपबैक एड्रेस में अगर राउटर आईडी भी नहीं रहा, तो ये राउटर आईडी भी नहीं रहा अगर आपका, तो ये क्या करेगा, लूपबैक एड्रेस के हिसाब से अपना डीआर चूज करेगा। इफ नो कॉन्फ़िगर लूपबैक, अगर मान लीजिए किसी इंटरफेस पे हम लोगों ने लूपबैक का कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो वो क्या चेक करेगा, देन हाईएस्ट एक्टिव आईपी एड्रेस ऑन द इंटरफेस विल बी डीआर। वो हाईएस्ट इंटरफेस आईपी एड्रेस के बेस पे डीआर को जनरेट कर देगा। ठीक है। और डीआर और बीडीआर का यूज हम लोग क्यों करते हैं, टू कंट्रोल फ्लोडिंग इन डेटाबेस, रिड्यूस एडजेंसी टेबल। ठीक है। कल इसमें हम लोग ने ये भी पढ़ा था ऑथेंटिकेशन इन ओएसपीएफ। ऑथेंटिकेशन क्या होता है, नल ऑथेंटिकेशन होता है, सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होता है,
MD5 ऑथेंटिकेशन होता है। MD5 ऑथेंटिकेशन जो होता है ग्लोबली और बाय इंटरफेस होता है, इंटरफेस पे होता है, ठीक है, जिसमें से हम लोग ने पढ़ा था OSPF इंटरफेस प्रायोरिटी। इसका डिफॉल्ट प्रायोरिटी OSPF का 1 होता है और इसका जो रेंज होता है 0 to 255 होता है। 0 means that interface does not involve the DR and VDR election। 0 जो होता है DR and VDR election को नहीं करता है, ठीक है। तो कल हम लोगों ने इतना पढ़ा था और इसमें एक और पढ़ा था जिसमें से है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्यों कहते हैं, तो इसे हम लोग इट इज अ टेक्निक इन विच राउटर एक्सचेंज द टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन विथ देयर नेबर्स। फॉर एग्जांपल में हम लोग मान सकते हैं one router receive a packet and send the copies to all its neighbor, finally each router receive a copy of the same information। तो ये हम लोग का लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल था, जिसमें से हम लोगों ने एक पढ़ा था कि टाइप ऑफ एरिया इन OSPF। टाइप ऑफ एरिया इन OSPF के बारे में हम लोग को पढ़ना था, जिसमें से आता है टाइप ऑफ एरिया इन OSPF में आता है बैकबोन एरिया, स्टैंडर्ड एरिया, स्टब एरिया, टोटली एरिया, NSSA एरिया, नो सो स्टबी एरिया, टोटली NSSA। तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले थे। तो आज हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट पर न जाकर हम लोग आज प्रैक्टिकली पार्ट करेंगे और बैक का जितना भी हम लोग का है वो पूरा कवर करेंगे। वेट, तो चलते हैं सो विदाउट डिले नॉट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रैक्टिकली पार्ट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो है 3 राउटर है, R1 एंड R2 एंड R3, ठीक है। R1 पे जो हमारा इंटरफेस है और R2 पे, R1 पे हम लोग मान लेंगे 192.168.12.1 मान लेंगे और इस पे 2 मान लेंगे, यहाँ पे 192.168.23 स्लैश इसको भी 2 मान लेंगे और इसको भी 3 मान लेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा 1 है 192.168.13.0. पे इसको भी मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे R1 को, और ये जो हमारा R3 है इसको 3 मान लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे कि अब प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम लोग GNS ओपन करते हैं। OSPF हेडिंग डालेंगे बेसिक, ठीक है। हमारा GNS अभी ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अभी ओपन हो रहा है हमारा GNS। Let's start now। थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में।
OSPF basic. Okay. ठीक है, हमारे पास क्या था, टोपोलॉजी सबसे पहले देख लेते हैं। टोपोलॉजी हमारा क्या कहता है, सबसे पहले टोपोलॉजी समझेंगे। एक नीचे में टोपोलॉजी ले लेते हैं। हमारे पास जो है 3 राउटर है। दिस इज द टोपोलॉजी दैट विल यूज ऑल राउटर। द लिंक बिटवीन and R1, R2 and R1 Ethernet 10 Mbps link. All router links fast Ethernets. जो हमारा R2 और R1 है, क्या है, ये इथरनेट से अटैच है, ठीक है। और जो हमारा R1 और R3 है, ये फास्ट इथरनेट से है। तो इसमें हम लोग ने ये चेक करना है हम लोग को। सबसे पहले हम तीनों को टोपोलॉजी को आगे ड्राइंग कर लेते हैं और फिर उसके बाद कॉन्फ़िगर स्टार्ट करते हैं। I have a 3 routers. First, second, and third. I will connected a 3 routers fast Ethernet. Fast Ethernet. This is connected for fast Ethernet or this interface here. F0 by 0 and F1 by 0 router 1 and R2 router 2 F0 by 0 and F0 by 1 interface. Router 3 same interface F0 by 0 and F1 by 0. So let's start now. Start. This is first router and this is second router and this is third router. Okay, we will start with configuration between R2 and R3. Start configuration R2 and R3. This is the privilege mode. I will go to global mode. Interface F1/0. IP address. This is IP address 192.168.23.0 not 02 and world subnet was 24/255.255.255.0. No shut. No shut. Same interface R1. This is privilege mode. I will go to global mode. Then interface F0/0 IP address 192.168.12.1 subnet was 255.255.255.0. No shut. And then interface slash F1. This is attached for router 3 and F1/0. F1/0
IP address 192.168.13.1 255.255.255.0. No cert. This is done configuration for R1 and R2. R2 int f0/1. This is attached for R1. IP address 192.168.12.2 255.255.255.0. No sir. Then I will configure R3. This is privilege mode. I will go to global mode. First of all, interface F0Y0, IP address 192.168.13.0, 13.3 and 255.255.255.0. No cert. Okay, then interface int interface f1/0, IP address 192.168.23.3/value 24 255.255.255.0. No cert. 3 routers I will configure interface and IP and not cert. Then I will configure OSPF. First of all, I will configure R2 OSPF router OSPF process ID is 1. You can check the process ID for question marks unreached. Okay, process ID 1. Then you can configure the manually router ID. Yeah, it is default to network 192.168.23.0, then world cosmos 0.0.0.255 area 0. OSPF enable this R2 interface. Then I will go to R3 router OSPF process ID 1 and network 192.168.23.0, world cosmos 0.0.0 and 255 area 0. I need to use the router OSPF command to get into the OSPF configuration. The number first one is the process ID, and you can choose any number you like. It doesn't matter, and if you want, you can use different number each router. Then the second steps is to use the network command. It works similar to RIP, but it is simplified different. Let me break down you. You can check the networks. So I like RIP. The network command does two things. First, advertise the router advertise the network that fall within the range in OSPF activity. OSPF on the interface that fall within the range. This means that OSPF will send hello packets on the interface. Behind 192.168.23.0, you can see
It's a wildcast mask 0.0.0 and 255. This is not subnet mask but a wildcast mask. A wildcast mask is a reserved subnet mask. Let me give 4 examples. Suppose that suppose that subnet mask 255 subnet mask 255, then wait a second. Yes, 255 255 255 and 0. This is subnet mask. And wildcast mask, you can check the configure. Wildcast mask wildcard mask 0 0 0 and 255. This is wildcast mask. When I say reserved subnet mask, I mean that the binary first and OS of the wildcast mask is flipped compared to subnet. Okay, subnet mask. A subnet mask of 225.225.225.225.0. This is the same as wildcast mask 0.0.0 and 255. Don't worry about this too much for now, as the examples explain wildcast mask to you when they talk about access listed. First, so use area, so you can need a specific the area 0. There are 3 routers is area 0. In our example, we have configured single area OSPF. All routers belong to area 0. After typing in my network command, you will see this message in consoles. First of all, I will check never do IP OSPF never. This is address for 192.168.23.2 priority 1 and full state BDR. Date timing 38 seconds. It is attached for 192.168.23.2. This is interface fast Ethernet, and you can check router 2. Do show IP OSPF never. This is DR. It is addressed for 192.168.23.3. Priority 1 is a state full, and DR it is dead timing 38 and 192.168.23.3 and fast Ethernet F0 by 1 F1 by 0. Sorry. So you can check do show IP OSPF never. Do show IP OSPF interface F1/0. This is internet address 192.168.23./24 area 0. Address via network statement or network types is broadcast network host 1. Router ID 192.168.23.2. You can change the manually router ID. So this is hello timing 10 seconds and dead timing 40 seconds, wait timing 40 seconds.
This is the router ID 192.168.23.2. You can change the manually router ID. So suppose that router ID 2.2.2.2. Here, reload or user clear the OSPF process for a command for this take effect. This is not changed for the router ID. You can check here. This is not. I have configured the router ID, but this is not changed, and I have cleared the process to do clear IP OSPF process 1. Do clear IP OSPF 1 process. Yes, here do clear IP OSPF process 1, and rest the OSPF process 1. You can know this is yes, I have a chance. This is down for never, interface down detected, and sometimes wait. After that we'll change router ID. Then I will change the router ID R3 IP OSPF interface F1/0. This is router ID. This is router ID 192.168.23.3, and I will change manually router ID. Adjacency forces 2.2.2. Never loading in the full state. So you can check here, and there router 2.2.2.2 manually change for router ID, and network types broadcast network. By default support broadcast network. You can change the network types manually, and I will change the router ID R3 router ID 3.3.3, and same process here on do clear IP OSPF 1 process. This is yes. Let's change the OSPF as goes down. I will wait sometimes, then here router ID change for 3.3. And network type broadcast network. You can change the then SU IP protocol. I will check the SU IP protocol. SU IP protocol. Sorry, what is this, sir?
Yes. Uh, as you can see above the router ID 3.3.3, you can check here 3.3.3. Changing the and some things you could normally do IP address on your router have to be unique, so your OSPF router will also unique. Understanding how OSPF selected a router ID is the something you have to understand. For examples, however, right now you have an OSPF never adjacency between router 2 and router 3. Configure our router so that R2 and R1 and R3 also become OSPF neighbors. You can check the neighbors router OSPF1 process network types area 0. I will already configure. Yes. Yes, you can check the IP OSPF neighbors. Yeah, this show IP OSPF neighbor. Sorry, do show IP OSPF neighbor. This is neighbor ID 2.2.2 and priority 1 a second, and R2 is VDR. You can check here. Do show IP OSPF neighbor. This is VDR. He is connected for 3.3.3 and full state VDR. This is VDR. Okay. Yes, you can check the router OSPF route. Suppose here show IP route OSPF route OSPF. Do show IP route OSPF. Here do show route. Here this is an area backbone 0. I have connected for area 0 and topology. It is a intra area router listed 1 and 2 dot 1 and 2.16 at 23./24. Intra area cost is 1 and area 0 connected via 192.168.23.2. This is connected for fast Ethernet 1 by 0. 1 and 2 they here R2 I will connect it for this via interface 1 and 2.168. I have configured the interface IP 1 and 2.168.23.2. This is the manually configured for IPOSPF router and router ID. I hope you understand. Next topics start now. Backbone area. What is backbone area? First of all, what is backbone area? Okay. What is backbone area? What is backbone area? It is responsible for it is responsible for responsible for
It is responsible for communication between two or more non-backbone areas. Then by default two non-backbone area cannot communicate with each other. This is backbone area. It is responsible for communication between two or more non-backbone area. By default, two or non-backbone area communicate within each other. This is backbone area. And what is redistribution? What is redistribution? Redistribution, it's allow router from one routing protocol to be advertised in another routing protocol. And types of area in OSPF. Types of area in OSPF. This is first backbone area is equal to 0, then 2 a standard area, this is 1 to 4 billion, 4.3 suppose it billion. Third, a stub area. Fourth, totally area. Fifth, NSS no so study area. Sixth, totally NSS This is 6 type of area in OSPF. First, backbone area. Second, standard area, and third, stub area, and fourth, totally area, and fifth, NSS, sixth, totally NSS.
So I have discussed for backbone area. This is the responsible for communication between two or more non-backbone areas. By default, two non-backbone area cannot communicate with each other. This is backbone area, and second, a standard area. I will discuss tomorrow, or then I will. Yes. Okay. Yeah. This is virtual links. So I have discussed for virtual links. So what is virtual links? Virtual links. Virtual links. Virtual links to connected to the backbone area through a non-backbone area. Second, virtual links. Virtual links is not a physical link. It's a logical, both are same link. Disadvantage of virtual links. Disadvantage of virtual link. First, no dead timing. Second, no dead timing. Second, no DR and VDR. Third, point-to-point network. Fourth, hello suffers after forming adjacency. This is disadvantage of virtual links. So right now here, no first, no dead timing, no dead timer. Second, no DR BDR election. Third, point to point network. Fourth, hello suffrage. Hello suppress after forming adjacency. This is disadvantage of virtual links. Then difference between intra-area and inter-area routers. I discussed for the practically intra-area and inter-area. So here you can check the right now intra and inter-area. What is different between different
between intra and inter area. Intra and inter area. Wait. Intra and inter area. What is different between intra and inter area? Intra area. Intra area. Router. Routers that are learned and originated in the same area. Same area. Originated in the same area. This is intra area. And inter area router. Routers that are originated in the in another different area and advertised in your area. Your area. This is inter area. Tomorrow I will discuss for OSPF neighbor states. Thanks for this watching video.